class. So get ready for the class, okay? So as in our previous class we were talking about rhyming words, right? So we'll discuss the same topic today also. We were talking about rhyming words. As I told you earlier, rhyming words का मतलब क्या है? Anybody knows? So let us write the definition for rhyming words. Then afterwards we will do some exercises today that you'll need to copy in your exercise copy. Yes, Pratik, are you writing down all these things I am teaching you all? You all have to write it down in your copy, okay? Let's write the definition for rhyming word. Rhyming words that have the same ending sound. This is the definition for rhyming words, okay? So rhyming words का मतलब क्या है? Rhyming words are words that have the same ending sound. Ending sound क्या होता है? उनका rhyming words का same होता है, ठीक है ना? I gave you some examples also. Yesterday we wrote some 2 points for rhyming words also, right? So today we will do some exercises regarding this topic, okay? Rhyming words का ये मैंने example दिया जैसे कि cat, cat and bat, right? hat, mat. These all are what? These all are rhyming words, right? These all are rhyming words. Why it is called rhyming words? Because as I told you earlier that their endings are all same, right? Rhyming words में क्या होता है? इनका endings का क्या होता है? Same होता है, right? The word what only here is different is the starting letter. As you can see here, the starting letters are all different, right? But they sounds alike. Here, ये लोग का क्या होता है? Sound भी their sounds alike. ये लोग को क्या होता है? These words have the same sound. Okay, they have the same sound. They have the same ending, but their starting letters are different. Okay, these is called rhyming words. Okay, so I hope I made you clear with the concept of rhyming words. अब rhyming words का मतलब क्या है? मैंने आपसे बहुत क्लियर कर दिया होगा, right? Pratik, do you have any question?
for rhyming words. Now let me give you examples for non-rhyming words. Okay, so that you don't get confused. आप लोगों को confused ना हो जाए, इसलिए मैं आप लोगों को non-rhyming words का example भी दे दूँगी, ठीक है? Non-rhyming words. Okay. Non-rhyming words का क्या होता है? If the ending sound is different, the words are not. इसका क्या होता है? If the ending sounds read the sentence carefully, okay? If the ending sounds is different, the words are not. The words are not rhyming. Non-rhyming words का मतलब क्या है कि if the ending sound is different, the words are not rhyming words. जो words का ending sound, if the words have the different ending sound and different sounds or different endings, they are not rhyming words. They are not called rhyming words. They are called non-rhyming words. Okay, understood? Don't get confused with the with rhyming words and non-rhyming words, okay? So let us see few examples for non-rhyming words. Example is, I write it over. Examples are cat, dog, dog, pen, peacock. One more example, I'll write it over here, okay? Sun, bag. These are the examples for non-rhyming words. As you can see, there what happened is their endings are different, right? Their endings are different. Though their starting letters are also different, but the endings are also different, right? In the second example also, their endings are completely different, right? They are very much different, right? So what these words are called? These words are called non-rhyming words. Okay. If in case
their endings are same. But what we wrote here is BAG, bag. And in bag we have the ending here is different, right? So that is why these two words are not rhyming. That is why they are called non-rhyming words. Okay, understood? So now I'll give you one more example. Okay, this was the non-rhyming words. Are you all clear with the concept of non-rhyming words? Non-rhyming words का मतलब क्या होता है कि जिसका ending sounds different होता है, right? जिसका ending letters जो होता है वो different होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Non-rhyming words. Okay, so let us see one example. Rhyming words are also used in poems. Rhyming words कहाँ पे use होता है? Rhyming words are used in poem as well. Okay, rhyming words are also used. Rhyming words are also used in poems. Rhyming words कहाँ भी use होता है? Poem में, right? Poem and songs. Poem and songs. All right. Rhyming words are also used in poem and songs, right? So, for example, let us write one small rhyme or poem, whatever you want, you can call it. I'm writing all this to make you all understand. Okay, you don't have to write. You don't need to write all this in a copy. Okay, I'm just making you sure. I'm just writing this because to make you sure for कि आप लोगों को rhyming words समझ में आ रहा है कि नहीं, या rhyming words को अच्छे से समझने के लिए आप लोग मैं ये लिख रही हूँ, ठीक है ना? आप लोगों को लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना? You don't have to write it in your copy. It's all. Example. This is the example where we used rhyming words in poem, right? Rhyming words हमारा rhyming words यहाँ पे कहाँ use हुए? Can you all notice? So the rhyming word here is star and R. While saying these two words, when we listen carefully, what happened is their sounds are same, right? When we say this poem or say this rhyme, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Star and R are rhyming, right? So here
Star and R are rhyming words. Okay, यहाँ पे क्या हुआ है? Star and R are rhyming words. Okay, so ये देखो working. Their endings are different, but what happened is their sounds are same, right? So in this poem, your star and R are rhyming words. Okay. So as we are running out of time, I could not complete this topic today also. So we'll continue with this topic tomorrow. Okay. Now get ready for your Hindi class. I'll give you some exercises in tomorrow's class, okay, about the rhyming words. This was just an explanation for you all to understand, okay. So now get ready for your Hindi class. Thank you. गुड आफ्टरनून बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। चलिए हम शुरू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था अ की मात्रा वाले शब्द पढ़ा था ना। चिन्ह देकर सही शब्द पर क्या दिए थे? सही का निशान लगाए थे। तो कल हमने 47 क्या किया था? पूरा कर दिया था। अब स्वरमंग बुक है, देख लीजिए। स्वरमंग बुक पेज नंबर 48। तो क्या करना है? अन की मात्रा वाले शब्द को हमने क्या करना है? लिखना है, और अन की मात्रा वाले शब्द हमने देखना है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? अन की मात्रा वाले शब्द को हम देखेंगे। तो चलिए अब क्या करना है? पहले हम अन की मात्रा को पहचानते हैं। अन की मात्रा क्या है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अन की मात्रा। अब चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इसमें कौन सी मात्रा को जोड़ना है? तो हमने क्या बताया आपको कि पहले जो शब्द लिखा रहता है, पहले हम वो शब्द को लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क व्यंजन। तो यहाँ पे हम क लिखे हैं, उसमें क्या जोड़ना? अन की मात्रा। कल हो गया। और फिर हम वैसे ही सेम करेंगे। क्या करें? ख लिखे, ख में क्या करेंगे? अन की मात्रा को जोड़ना है। फिर ग में अन की मात्रा, फिर ग में अन की मात्रा, ठीक है। अब देखिए, इसी को बोलते हैं अन की मात्रा। अन की मात्रा वाले शब्द।
मात्रा वाले शब्द, ठीक है। अब चलिए इसको हम देखते हैं। अब हमने क्या देखा पहले तो हमने देखा कि क से लेकर ख में, अब हम च करने जाते हैं। च जो कौन की मात्रा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम देखिए इसमें हम क्या करेंगे, चौक पहले क्या करेंगे हम लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे अंकित, क्या हो गया चल। अब यहाँ पे हम छक पहले लिखेंगे, उसमें अन की मात्रा छन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे ज, ज में अन की मात्रा जन। अब यहाँ पे झ, झ में क्या करेंगे अन की मात्रा, झंडा हो जाएगा जंगल। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए चंचल। अब इसको हमको क्या करना है, अब ये हमने क से क्या किया छ तक हमने लिख लिया, ठीक है। और यहाँ में अन की मात्रा नहीं लगती है। अब देखिए अब यहाँ पे हम ट की मात्रा से जाएंगे, ठीक है। की मात्रा अब हमने क्या किया क ख में कर लिया, अब चसे पे किया, अब ट में जोड़ के ये हम लाइन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये लाइन के ऊपर ही हम की मात्रा हम लगाते हैं। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे शब्द लिखेंगे, व्यंजन कोई सा भी व्यंजन लिखेंगे, उसके बाद हम ये यूज करते हैं अन की मात्रा। अब देखिए यहाँ पे दिया थ, तो अब चलिए तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ठ पहले लिखेंगे, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ पे मतलब ऐसे ही क्या करेंगे जिसपे हम अन की मात्रा जोड़ेंगे उसके ऊपर हम अन की मात्रा लिखेंगे, ठीक है। ये तो आपको समझ में आएगा। चलिए हम सब बनाते हैं। आप लोग अपने अपने कॉपी में क्या कीजिएगा नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। क्योंकि हम जब लिखेंगे स्क्रीन पे आप लोग भी अपने अपने कॉपी में इसको क्या कीजिए लिखिए। उसके बाद जब हम आपको स्क्रीन पे जब हम समझाएंगे तो फिर आप अपना कॉपी लिखना बंद करके समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है अन की मात्रा, अन की मात्रा वाले शब्द, ठीक है। अब चलिए हम अन की मात्रा वाले शब्द कैसे लिखेंगे अब हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अन की मात्रा वाले शब्द हम लिखते हैं। सॉन्ग, ठीक है। पंग, अंग,
जंग, धन, शंख, पंखा, लंका, घंटा, झंडा। ठीक है, अब चलिए इस हम दिखाते हैं आपको क्या चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या करना है। सौ में हम क्या लगा है, अन की मात्रा ख, तो क्या हो गया संग। प में अन की मात्रा ख, क्या हो गया अंग। अ में अन की मात्रा ग, क्या हो गया अंग। ज में अन की मात्रा ग, जंग। देखिए जो हम मात्रा बोलते हैं ना वो हमारे ध्वनि के द्वारा सुना जाते हैं। जैसे कि देखिए क्या होता है, संग, अंग, टंग, घंटा, शंख, पंख, अन की मात्रा क्या होता है सुनाई देती है। अब यहाँ पे देखिए जंग, ढंग, सन, पंखा, ल में अन की मात्रा, प में आ की मात्रा लंका। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम और भी लिख सकते हैं दंड। दंड मतलब क्या होता है, सजा। अब यहाँ पे क्या लिखे है ढंग, और वहां पे दंड। शन, प में अं की मात्रा, ख में आ की मात्रा, क्या हो गया पंखा। ल में अं की मात्रा, ख में क में आ की मात्रा, क्या हो गया लंका। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, अ में अं की मात्रा क, अंक, प में अं की मात्रा ठ, कंठ, ड में अं की मात्रा क, डंक, घ में अं की मात्रा, ट में आ की मात्रा घंटा, झ में अं की मात्रा, ड में आ की मात्रा झंडा, और द में अ की मात्रा, ड में क्या हो गया दंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, चित्र को देखिए उनके नाम लिखिए। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए चित्र को देखकर उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए जो चित्र है आपको तो दिख ही रहा है कि क्या है अंगूर है। तो यहाँ पे क्या करना है अंगूर लिखना है, और यहाँ पे क्या करना है झंडा लिखना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अंक की मात्रा वाले शब्द, ट में जब हम अंक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा टंग, ठ में जब हम अंक की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो गया ठंग, त में जब अंक की मात्रा जोड़ेंगे तो तंग, श में जब अंक की मात्रा जोड़ेंगे तो शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए च में जब जोड़ेंगे तो चंग, छ में छन, और ज में जंग, और झ में झंग। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अंक की मात्रा वाले शब्द। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, अंक की मात्रा लगा के शब्द को पूरा किया है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। किसी को क्या करना होगा, याद करना होगा, याद करके और कॉपी में लिख के लाना होगा। और ये दोनों हम जो दिए दो चित्र बनाए हैं, एक अंगूर का और एक झंडा का, वो चित्र देख के उसमें झंडा में आप कलर भरिएगा। ऊपर कौन सा झंडा में 3 कलर होता है,
हरा रंग भरेंगे और झंडा में आप लोग कलर भर लीजिएगा और उसमें झंडा का नाम नीचे लिखना है, ठीक है। और चलिए अब आप अंक की मात्रा वाले शब्द को याद कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। Good afternoon, my dear students. Now you all be ready for your math class. So for today's topic, we are going to do as guided. We will do as guided. We will do as guided. Alright, so how do we do this? We will see all the questions that is given to on the board. We will look at the sign and we will try to solve it accordingly. For example, like I give you question in forms of 4 plus 6. Alright, 4 plus 6. How are we going to do it? As we have seen over here, this is the add sign. This is the sign of addition. So here what we are going to do? We are going to add 4 with 6 and write the sum or the. So for next question, if we have, the question is given in forms of 5 minus 2. So here 2 minus. So we will minus 2 with 5 and we will write the sum or the total of these. So this is how do as guided is done. So we will do some exercises related to this to make you all clear. Alright. So the first question for today is tell me in the comment box what will be the answer for this. What will be the answer? What will be the sum or the product of this? When we add 3 with 3, what will be the total we get? This is question number 1. So you all tell me the answer in the comment box. When we add 3 with 3, how much do we get? Very good. Therefore, it is 6. Alright, how do we got 6? 1, 2, 3 plus 1, 2, 3. So by adding both of them, how much do we get? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So 3 plus 3 is 6. Alright. So how did we understood to add this? हमें कैसे पता चला कि इसको हमको ऐड करना है? ये साइन देखकर हमें पता चला है ना कि ये दो नंबर को हमको ऐड करना है। तो इसी को डू एज डायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब जो बताया गया है वो कीजिए। ऑलराइट? So the second question for today is 5 minus 0. So you all tell me what will be the answer over here? 5 minus 0. What will be the answer? 5 minus 0. When we subtract 5, 0 with 5, how much do we get? What will be the answer? You all do the sum and tell me. What do we get over here? How much is the correct answer? 5 minus 0. What is the correct answer?
answer? So what will be the correct answer for the second question? It is 5 itself. Alright, it is 5. Why 5 minus 0 is 5? Whenever any number is added or subtracted from 0, the number will be same. Alright, so 5 minus 0 is 5 itself. Our third question is, so what will be the answer for this? 3 into 3. What will be the answer? What will be the answer for this? 3 into 3. 3 into 3. How much will we get? Very good. It is 9. 3 times 3 is 9. Alright. हमें कैसे पता चला कि इसको मल्टीप्लाई करना है? Because we saw the sign of multiply. So ऐसे जब भी ऐसे क्वेश्चन आप सबको दिया गया होता है ना, तो आप सबको साइन ध्यान से देखना है. जैसे कि आप सबको मालूम है, this is the sign of addition. Alright, this is the sign of addition. This is the sign of subtraction. Subtraction. And this is the sign of multiplication. This is the sign of multiplication. जब आप सबको ये साइन का मतलब समझ में आ जाएगा तभी आप सब लिख सकते हो. Add means इसको जोड़ना है. Subtraction मतलब घटाना है. And multiply मतलब इसको गुना करना है. ऐसे. Into means tables की तरह आपको इसको multiply करके लिखना है. Alright. So we are doing. We have completed till 3. 3 plus 3, 6. 5 minus 0 was 5. 3 times 3 is 9. So we move on to the next question. What will be the answer for this? 8 plus 2. 8 plus 2. How much is the answer for this? You all tell me. 8 plus 2 is? Very good, viewers. 8 plus 2 is 10. By adding 8 with 2, we get 10. Alright? So the next question is, so this is our next question. So 7 minus 7. When we minus 7, subtract 7 with 7. How much do we get? Tell me. 7 minus 7. आप सब अपने मैथ कॉपी खोलकर ये सब लिख कर और मुझे आंसर बताइए. You all do this exercise in the copy and tell me the answer. They were very good. 7 minus 7 is 0. Alright? We subtracted 7 with 7. So no number is left. So that is why the answer is 0. Alright? Very good. So now, what is the answer for this? 8 minus 1. How much do we get by subtracting 1 with 8? How much do we get? Very good. It is 7. Alright? It is 7. Very good. So now,
You all can read the questions very carefully. Okay, what is the question asking? Write the number name of 8686. 86 in terms of number name. How do we write it? How do we write 86 in terms of number name? Tell me. 8686. It is in digit form. So what is the number name of 86? How do we write it? Tell me in the comment section. I am waiting for your answers. 8686. How is it written? Very good. 86. Only Devarshi is answering the questions. What happened to the rest of you? EIGHTY 80 and SIX 686. Alright. So what will be the number name of 24? How do we write 24 in terms of number name? Tell me. 2424. How do we write 24 in terms of number name? Very good, they were write it as TWENTY 20 FOUR 24. First we have to look at the number very carefully. Alright, पहले हम सबको नंबर को अच्छे से देखना है. नंबर अच्छे से देख कर ही उसका नंबर नेम को लिखना है. Alright, 86 is 86. 86 is 86. So we write 86 in forms of number name like this. 24 is 24. 24 is written like this in forms of number name. Alright? So you are telling me to write this number in form of ascending order. How do we write this number in ascending order? Ascending order means small to big, right? So how do we write these numbers in forms of ascending order? You all tell me. How do we write these numbers in forms of ascending order? Tell me the order for this. First, what we are going to write? We are going to write the smallest number amongst all the numbers. So what is the smallest number over here? You tell me how do we write this number in forms of ascending order? We write it as, so by looking at this, what is the smallest number? It is 2. We will write 2 over here. So after 2, what is the smallest number? It is 6. 6 after 6, it is 7. And lastly, 9. 9 is the biggest number amongst all. So this is how these numbers written in forms of ascending order like this. First, we have to write the smallest number. Then we have to move forward. Alright, so let me see if you have made it correct. They were very good. This is how ascending order is written. Now, now tell me how do we write this number in form of descending order. Descending order means
How do we write this number in forms of descending order? Tell me how this number is written in descending order. What is the proper order for this number? First, we will look for the biggest number in the column. So, what is the biggest number? We will start it with that. I am waiting for your answers. So this is how we write numbers in descending order. So ascending order we write numbers in ascending order we write numbers from small to big. Alright? We are not to be confused with ascending and descending order. Ascending order means when we write number from small to big. And when descending order, and in descending order, what do? We write numbers from bigger to smaller. Alright. So your homework for this is your homework. Okay. Write it down in your exercise copy. These are the 8 questions. This is for homework. So you all are to copy this question in your math copy and do the homework in. I will be checking the homework when your offline classes will resume. Okay. Alright. So copy this question. Write it down in the math copy. This is the question for homework today. I hope everyone is writing this down in your copy. Write the numbers properly. So these are the 8 questions that you all are going to do for your homework. Write it down with proper numbers and put the signs correctly.